Today's topic is photosynthesis. What is the photosynthesis? Photosynthesis meaning literally synthesis using light. Introductions. From Greek, photo means produced by light. Synthesis, a whole made of parts put together, means synthesis using light. What is the definition of photosynthesis? Photosynthesis is a process whereby plant, algae, and bacteria use the energy of sun to produce organic compounds such as sugar from inorganic compound, that is the CO2 and water. So that is the process CO2 plus water in the presence of sunlight and chlorophyll to produce carbohydrate and oxygen is occur by the photosynthesis. The most active photosynthetic tissue in higher plant is the mesophyll of leaves containing specialized light-absorbing green pigment called is the chlorophyll. Why is photosynthesis so important? Photosynthesis is one of the most important biological processes on the earth. It provides oxygen. We breathe, consume much of the CO2 from the atmosphere. Third, provide food in form of the fruits we eat. Fourth, energy. Fifth, fiber and materials. Photosynthetic pigments which capture the lights are the chlorophylls and accessory pigment. Chlorophyll, you already read the chlorophyll A, B. Accessory pigment involve the phycopyllins and carotenoids. Spelling is mistake, that is the carotenoids. Phycopyllins is three types: phycoerythrobulins, phycocyanin, allophycocyanobulins. Phycoerythrobulins you read in the red algae. Phycocyanobulins you read in the cyanobacteria. Due to this color, the blue-green algae are the blue in color due to this pigment. Allophycocyanobulins, that is the cyanobulins. Then carotenoids is two types, xanthophylls and carotenes. First one we detail about the chlorophylls. It is formed from the succinyl coenzyme A. It is the light absorbing green pigment, absorb the blue-red light wavelength. It is made up of lipid which is soluble. It is polycyclic, planar, tetrapyrrole ring. Central metal ion is magnesium and it is act as a chelating agent. It has cyclopentane rings, ring 5, fused to pyrrole ring 3. It has two parts, porphyrin ring, 4 carbon and 1 nitrogen atom present on it. Second is the hydrophobic phytol tail, which is made up of 20 carbon and non-polar in the nature. It is bound with the 4 pyrrole ring. It is attached with thylakoid membrane in grana and flat channel. Chlorophyll structures. This is the chlorophyll structures. I already tell that it has two parts. First is the porphyrin ring, which is made by the 5 rings. You already seen in the diagram 1, 2, 3, 4 and 5. And 4 nitrogen are present, which is linked with the magnesium cyan, which is the act as a chelating agent. And below this hydrocarbon tails made up of the 20 carbons. It is responsible for the solubility in the lipids and insoluble in the water. That is the non-polar in nature.
Then we already know that chlorophyll are different types, that is the chlorophyll A, B, C, D and E. Then chlorophyll, what is the difference in different chlorophylls? The chlorophyll A have methane group, CH3 group on the ring number 2. And in chlorophyll B, it is the CHO group on the ring 2. Chlorophyll C is like the chlorophyll A, except phytol tail is the absent. Chlorophyll D, it is like chlorophyll A, but OCHO group is replaced by CH2 group on the rings. Okay, that is this one in the ring number 1. That is seen in the diagram. So that is replaced by OCHO. What is the difference between chlorophyll A and B? The chlorophyll A and B, first one is the formula. Chlorophyll have formula C55H72O5N4Mg and chlorophyll B is the C55H70O6N4Mg. Color in pure state. Chlorophyll is the blue-green color and chlorophyll B is the olive green. Pigment type, chlorophyll is the essential and chlorophyll B is the accessory photosynthetic pigment. Group of pyrrole ring number 2. On the pyrrole ring 2, methane group is present, but in chlorophyll B it is CHO group, aldehyde group is present. Light absorbing. Chlorophyll mostly absorb red light and chlorophyll absorb the violet blue wavelength light. Reaction center pigment. Chlorophyll A present in all land plants. Chlorophyll B is present in the chlorophysis, caraphysis, euglenophys. You can say that it is present in the algae. Type of chlorophylls, already I will told you. Chlorophyll is the most common. Chlorophyll B is also most common. Chlorophyll C present in the brown algae and diatoms. Chlorophyll D present in red algae and blue-green algae. Chlorophyll E is the rare. It is sometimes present in xanthophylls, that is the yellow-green algae. Different constituent group of the tetrapyrrole rings. There is also bacteriochlorophylls, that is the B chlorophyll. B is related with the bacteria and chlorophyll A. That is B chlorophyll, B chlorophyll B, B chlorophyll C, B chlorophyll D and B chlorophyll E. Bacterioviridae. It is a green sulfur bacteria. Bacteriochlorophyll absorb longer wavelength as compared to the chlorophyll molecules. Second one is the accessory pigment. Already told you there is two types, that is the carotenoid and the phycobilins. The first one is the carotenoids, that is the orange yellow color. Xanthophylls and carotenes are involved in the carotenoids family. Second is the phycobilins. The loss of manganese in chlorophyll causes formation of pyophytin, that is the non-green compound. First one we discuss about the carotenoids. Carotenoids, it is supplementary light harvesting. Absorb light of wavelength 425 to 490 nm, mid-region of the visible light. It gives orange or red color. It is generally C40 terpenoid compounds. It is formed by condensation of 8 isoprene unit and it is lipid soluble pigment. It shield pigment protect chlorophylls from the photooxidation. It is responsible for the yellow color of the leaves and it is three form alpha, beta and gamma. That is the different stereoisomers.
Wavelength absorbed is depend on the number of conjugated double bond. Second, isomeric configurations. Third is the nature of the end group. So there are two types. First one is the xanthophyll, which contain the oxygen. It is present in the leaves, lutein, and brown algae, that is the phycoxanthine. Second is the carotenoids, that is not containing the oxygen. It is purely hydrocarbons. The orange color of carrots is due to the carotenoids. You can say that जो गाजर होती कैरेट्स होती उसका जो हम कहते हैं ऑरेंज कलर होता है वहाँ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड्स होते हैं. जनरल फॉर्मूला इज C40 and H56. Then function of carotenoids. It provides protection against photooxidation damage. That is called the photoprotection. It acts as the sequencer as well as the squeezer during the photosynthesis. Third, it also acts as non-photochemical quenching. Fourth, absorb and transfer light to chlorophyll. First one is the photochemical quenching. It is when the energy stored in chlorophyll in the exciting state is rapidly dissipated by a photochemical reaction or excitation transfer is called the photochemical quenching. You can say that कि जब लाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है और वो एक्साइटिंग स्टेट में चला जाता है, ठीक है, तो जो एनर्जी यूज होती है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में जाने के लिए, तो जो रिएक्शन होती है, ठीक है, वो हम बोलते हैं फोटोकेमिकल क्वेंचिंग. कैरोटेनॉइड्स यहाँ पे एक्ट करते हैं फोटोप्रोटेक्टिव by rapidly quenching the exciting state of chlorophyll. यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आपकी ग्राउंड स्टेट से आपकी एक्साइटिंग स्टेट में जाती है तो वो रैपिडली जो क्वेंचिंग करता है, क्वेंचिंग यानी कि दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करता है, ठीक है. तो ये को क्या करता है कि आपका जो क्लोरोफिल है, तो आपका एंटीना है, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है. इसलिए ये इसको जो आपका रिएक्शन सेंटर है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है. तो वहां पे ये फोटो प्रोटेक्टिव का काम करता है ताकि आपकी क्लोरोफिल जो है वो आपके डिस्ट्रॉय ना हो. नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग. क्लोरोफिल इन एक्साइटिंग स्टेट कैन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग इट्स एनर्जी एज ए हीट फॉर्म इज कॉल्ड द नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग. बीटा कैरोटीन्स, इट इज कॉल्ड एज द प्रोविटामिन्स. That is the diagram. We can choose them. This is reaction center P680 and the antenna, which is made by the chlorophyll A, B, and carotenoids. Then light is received by carotenoids and used by the antenna complex, and that is the energy gradient जो है हाई. लाइट में हमारे पास हाई होता है लेकिन रिएक्शन सेंटर में लो होता है, तो ये एनर्जी को जो है चेंज करता है. जो कैरोटेनॉइड होता है ये आपके क्लोरोफिल पिगमेंट को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, ताकि आपकी ये जो एनर्जी ग्रेडियंट है आपका कम हो जाए और आपके जो पिगमेंट्स है, बॉन्डिंग है, वो आपकी डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है. इसलिए ये क्या करता है, आपकी हाई एनर्जी को लो एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आपके पिगमेंट को प्रोटेक्ट करने के काम आता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी लॉस हो रही है क्योंकि हाई से लो है, तो आपकी जो कुछ एनर्जी होगी वो आपकी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है और आपका जो है एक्साइटिंग स्टेट में जो आपका सेंटर फोटो सिस्टम जो आपका एक्साइटिंग स्टेट में चला जाता है. कैरोटेनॉइड एज ए फोटो रिसेप्टर. एज यू नो दैट जब लाइट सबसे पहले आती है तो उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, ठीक है. तो ये जो क्लोरोफिल के अंदर स्टोर कर ली जाती है और आपके जो है मॉलिक्यूल्स एक्साइटिंग स्टेट में चले जाते हैं. जब ये एक्साइटिंग स्टेट में जाते हैं तो दो तरीके से हो सकती है, रैपिड क्वेंचिंग और नॉन रैपिड क्वेंचिंग.
तो अगर रैपिड क्वेंचिंग होती है तो आपके जितने भी एक्साइटिंग मॉलिक्यूल्स है वो आपके जो है लो एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डिके बैक टू द ग्राउंड स्टेट बाय लॉसिंग एनर्जी एज हीट फॉर्म, कि एनर्जी की रैपिड क्वेंचिंग के कारण कुछ एनर्जी आपकी जो है हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है और आपके जो कैरोटेनॉइड्स है एज ए फोटो प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं। अगर ये रैपिड क्वेंचिंग नहीं करता है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन से जो आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके, वो आपके जो है रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ और एक्साइटिंग स्टेट में चले जाते हैं, जिससे जो है आपकी सिंगलेट ऑक्सीजन बनता है। सिंगलेट ऑक्सीजन क्या करते हैं, फिर वो डैमेज कर देते हैं मैनी कंपाउंड्स को और D1 प्रोटीन को करते हैं, जो कि फोटो सिस्टम 2 में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण फोटो इनिबिशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है जेंथोफिल्स। जेंथोफिल्स में आप कहते हैं वायलोजेंथिस, जो फिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एंथ्राजेंथिस, जियाजेंथिन आपकी गार्ड सेल्स में होता है। ये प्रोवाइड करता है सिग्नलिंग टू स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। डायटमजेंथिस जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, बेसिलियोफाइसिस में प्रेजेंट होता है। फुकोजेंथिन पियोफाइसिस यानी कि ब्राउन एल्गी में ये प्रेजेंट होता है। फाइकोबिलिन्स are the non-cyclic linear tetrapyrrole structure. It is lack of magnesium ion and phytol chain. It is similar to bile pigment bilirubins. It is water-soluble conjugated proteins. It is covalently bounded with the phycobiliproteins, जो कि आपका वाटर में soluble होगा. Absorb short wavelength lights above the 500 nm. Abundant in red algae and cyanobacteria. ये 3 टाइप का हम काउंट करते हैं। फाइकोएरिथ्रीन जो आपकी रेड एल्गी में होता है, जिसके कारण उसका रेड कलर होता है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। हालांकि ये रेड एल्गी में एक्सेस अमाउंट में मिलता है इसलिए रेड कलर देता है, और आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी में ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। फाइकोसाइनोबिलीज दैट इज द ब्लू कलर आपको देता है, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोसाइनिन लार्ज क्वांटिटी में मिलता है और स्मॉल क्वांटिटी इन द रेड एल्गी। थर्ड इज येलो फाइकोसाइनोबिलिन्स, ब्लू ग्रीन रेड एंड रेड एल्गी। येलो फाइकोसाइनिन का मतलब होता है कि इसमें फाइकोएरिथ्रीन और फाइकोसाइनिन दोनों ही आपके प्रेजेंट हो। देन नेक्स्ट आपका आता है फाइकोबिलिसोम्स। These are the phycobiliproteins aggregate into cluster that adhere to membranes called the phycobilisomes. Phycobiliproteins are 2 types. Phycoerythrin, which is made by the proteins plus में phycoerythrobilins present in red algae and small quantity in the blue green algae. Phycosinins, that is the proteins plus में phycosainobilins present in the blue green algae in large quantity due to and in the small quantity in red algae. Mostly cyanobacteria contain chlorophyll A, but chlorophyll B, that is present in the prochlorococcus, chlorophyll D in acrylochlorosis. Phytochromes, that is the photoreceptor pigment of the higher plants. Location of photosynthetic pigments. Oxygenic organism which produce the oxygen, that is in prokaryote it present in the thylakoid membrane in cytosol. In eukaryote it present in the thylakoid membrane of the chloroplast. And oxygenic organisms, the organism which not produce the oxygen but photosynthesis occur in them, that is the green photobacteria, chlorosomes and plasma membrane. Purple photobacteria present in the chromatophores of plasma membrane. Exceptional cases are present, that is the cyanobacteria. In cyanobacteria it is Glylobacter violaceus. Chromatophores, imaginated plasma membrane contain bacteriochlorophylls pigment.